Now, in this class, under pandas, we will try to understand how to install pandas. How to install pandas. Okay. As I told you that pandas is a library which will be used for data analyzing of data. Okay. सो डाटा को एनालाइज करने के लिए पांडा एक लाइब्रेरी है. ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज एज आई टोल्ड दैट सो मेनी लाइब्रेरीज आर देयर. पांडास, नमपई, साइकिट, साइपई, Django, okay, Keras, TensorFlow, so many libraries are there. Every library has specific function. हर लाइब्रेरी का एक अलग फंक्शन होते हैं. ठीक है. आपके ज़रूरत के मुताबिक, आपकी यूज़ के मुताबिक उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं. एज़ पर योर नीड एंड एज़ पर योर use that specific library will be used. Suppose if you want to create a game, so pygame library will be. अगर आप गेम को डेवलप करना चाहते हैं, pygame library इस्तेमाल हो जाता है. अगर आपने वेब डेवलप के अंदर है तो वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जांगो. ओके, ऐसा. Here pandas is a library for data analyzing of data. So how to install, that is very important. Agar if you install your python and pip is what? Python install package manager. It is a default package manager. This is a default. Pip is a default python package manager. So uh, it will be used to install other packages. Okay, other packages means libraries. Okay, how, let us see. So first of all, you need to come here where in your, as I told you that if you are working in your that is what your computer laptop, you need to download that is what latest python version. Okay, 3.8 whatever. Here in mobile, android mobile, I told you that in mobiles we can do a lot of coding, good coding without any laptop. Okay, लैपटॉप के बगैर कोडिंग हम लोग मोबाइल के अंदर बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं. मैं खुद लिख रहा हूँ. मैंने आपको बताया है कि डोंट डोंट फील दैट सर आई डोंट हैव एनी लैपटॉप. ओके, कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है. तो कैसे पिप अगर आपके पास नहीं है तो पहले इधर पता चल जाएगा. इधर आइए. सी हियर, दिस इज पिप, pip is what? This is the default package manager of python. Here under pip, check for any library name. Suppose pandas install. If it is already installed, so there is no any problem. If there is no any installation, it will install. Okay, use so it will try to check that. It will try to install pandas. So it is installing pandas. Okay, this is the way to install any library. This is the way to install. See, numpy, pandas, installing collected packages. Okay, completed. It will give a message for you. Suppose after that, if you want to some more, already it is intimate. Numpy pandas successfully installed. Numpy also installed. Numpy is what? Numerical python. Okay, pandas installed through means every time if you want to install a library, you need to go pip. I told you that pip is what? Python default package manager. In your Android mobile, this is PyDroid 3 version. I told you that to work with Python on Android mobiles to write a very good program. Click on here and go for this pip. Okay, interpreter, terminal, pip. Click on here and use any library name and then install. Suppose if you want to install SciPy, otherwise if you want to work with web development, Django. Okay, Django. Install. Django is for what? It is a library which will be used to work with web development. So it is trying to install all the Django related, use pre-built libraries at repository collecting. So until it will
give a message that is completed, so you need to wait. Installing collected packages when until it completed. Okay, if you want to use somewhat libraries for game related development, pygame, so pygame and install, same simple. So that is the way. Okay, no issue. Now come here how to, so I have briefed that how to install your pandas. If you already install your python, go through pip manager, python installation, default installation, package manager, package libraries all are equal. See, packages and libraries packages सब एक ही बात है. वो क्या है कि डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ. पैकेजेस, लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, दे आर व्हाट सम प्री डिफाइंड कोड. पहले कोड लिख के उनको कुछ नाम, फंक्शंस बोल के कुछ नाम दे के रख स्टोर करते हैं लाइब्रेरीज के अंदर. तो जब भी ज़रूरत होता है वो उस फाइल को आप इंपोर्ट करते हैं और रन करते हैं. उसके अंदर प्री डिफाइंड कोड लिखा रहता है. वो कोड हर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कोड 10 लाइन्स 100 लाइन, हमको पता नहीं कितना लाइन कोड लिखा है. ठीक है, तो ये हो गया. मैंने सेम ऐसा ही किया है. इंस्टॉल पांडा पिप इंस्टॉल. अगर अगर आपके पास पिप नहीं है तो पिप को पिप इंस्टॉल पांडास, pip इंस्टॉल पांडा. इफ़ दिस कमांड फाइल्स देन यूज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ऑलरेडी. अगर ये ऐसा पिप इंस्टॉलर के थ्रू नहीं होता है आपको, you need to use such a distribution already. ऐसा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को हमको लेना है, उसके अंदर ऑलरेडी पांडास इंस्टॉल्ड है. मीन्स वी नीड टू टेक इंस्टॉलेशन फॉर ऐसा पांडास इंस्टॉलेशन. आपने एज ए सीडी वगैरह या ऑनलाइन में कहीं से जिसके अंदर ऑलरेडी पांडास इंस्टॉल्ड है. एग्जांपल एनाकोंडा, स्पाइडर. ओके, टू पांडास के लिए दो एग्जांपल है. कोई ऐसा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऑनलाइन से ले लो जिसके अंदर ऑलरेडी पांडास इंस्टॉल्ड है. उसके अंदर एग्जांपल है एनाकोंडा, स्पाइडर. एक बार पांडास इंस्टॉल हो गया, वंस पांडास इज इंस्टॉल, नाउ वी नीड टू इंपोर्ट इट इन योर एप्लीकेशन बाय एडिंग द इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट पांडास. ओके, हम इधर जाएंगे. अभी इधर न्यू पेपर ले लेंगे, इधर लिखेंगे इंपोर्ट. ओके, पांडास. ओके, इंपोर्ट पांडास. तो उस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया पहले पिप मैनेजर के थ्रू. फर्स्ट बिफोर दैट वी हैव इंस्टॉल्ड pandas through pip manager, pip manager. It is a default package manager to install other packages, other libraries. Okay, so उसके बाद हमने क्या करना है, सेम एवरीथिंग यूज. देखिए आपने इसका कोड कैसा होता है. देखिए फर्स्ट इंपोर्ट पांडास. सो ये अलियास है. कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन, एवरी लाइब्रेरी विल बी कॉल्ड विथ अलियास नेम, अदर नेम. हर लाइब्रेरी का एक अदर नेम रख सकते हो आपका मर्जी. इफ़ यू विश, इफ़ यू डिज़ायर, इफ़ यू वांट टू कीप अनदर नेम. सो हियर पांडास is calling as pd alias. Okay, so my data, so every time we need not to refer pandas, we can call it as with a short name. That's why to save the time, every time pandas. So simply here see pd dot means pandas alias name, दूसरा नाम है पांडास का. सो नाउ कोड कैसा लिखा है इसने, ट्राई ट्राई करो कैसा होता है. माई डाटा सेट, एक डाटा सेट लिया उसने. ठीक है, उस डाटा सेट के अंदर क्या क्या है, कार्स. ओके, उसके अंदर BMW, वाल वाल्वो पैसिंग्स. ओके, 3, 7, 2. सो इसको कैसा उसने प्रिंट किया. देखिए कार्स के अंदर, कॉलम के अंदर सभी कार्स, ऑल द कार्स प्रिंटेड जस्ट इन कार्स कॉलम. पासिंग्स, the numbers, how many cars passed.
the numbers listed in passings column 0 1 2. This is serial number. So this, what happened here? So here what happened, try to understand. My var is a variable, understood that? My var is a variable, that variable is assigned with pd dot data frame, my data set. My data set is a variable, okay? So dot data frame, pd is what? Pandas. Pandas is what? A library. उस लाइब्रेरी के अंदर डाटा फ्रेम, डॉट मीन्स डाटा फ्रेम मतलब एक मेथड है, ओके? वो मेथड, क्या मेथड इस्तेमाल किया? डाटा फ्रेम मेथड इस्तेमाल किया पांडास लाइब्रेरी के अंदर, और उस मेथड के अंदर कॉल किया गया माई डाटा सेट वेरिएबल को, ठीक है? और ये पूरा माई वेर वेरिएबल को असाइन किया, इसलिए माई वेर को कॉल किया. माई वेर इज ए वेरिएबल. You can change this. Your my name, there is it is variable. You can call it as my Vasu, my name. But whenever you change variable name, you need to change this because you need to call this as, okay? So now if you run this code, same thing you will get. Understood that? But data frame, it is not to be changed. That is the default method of what? Pandas. Pd alias name for pandas. Otherwise here it is not here. That moment you need to use total word here, pandas, okay? Now run here, you are getting here. Every time you need to, whenever in the total coding you need to write pandas. I think better that you create alias name pd. Myself, I will write simply p. There is no any problem. whatever the alias name you will use है, जो भी alias नाम आप लिखते हैं उसी alias नाम के साथ इसको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि उस alias नाम के साथ उसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज होते हैं, सारी पांडा इज अ लाइब्रेरी, उसके अंदर जो भी मेथड्स होते हैं या क्लासेस होते हैं, हाँ, उनको हम लोग कॉल कर सकते हैं. ये डाटा फ्रेम इज ए मेथड, ओके? सो नेक्स्ट देखते हैं. इसको एक्सप्लेनेशन उन लोग एक स्टार्ट किया है. सो ये एक्सप्लेन कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पांडास एज पीडी, जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू दैट, एज आई ब्रीफड, पांडास लाइब्रेरी कैन बी called with short name, alias name. So pandas is usually imported under the pd alias. Alias is what? Pd means next, short name for alias means short name for pandas. So alias mean in Python, alias are an alternate name, next alternate name for your library. So alias name will be created with the as keyword, okay? As keyword will be used to create alias name for any library. Alias name is next name, another name, short name, okay? Now the pandas package library, I told you that package, it is in called in Java. In Python they are called libraries, just somewhere modules. Don't confuse yourself. All are predefined code written, and that is stored as functions and methods under classes, okay? So collection of files, collection of classes is called a module, otherwise library. In Java it is called package, okay? So pandas package now can be referred to as pd, short name, instead of pandas. So now under this, import pandas as pd as keyword used, okay, to keep short name for pandas. So my data set, a variable is created. Under this variable, what happened, try to understand. Cars, this square brackets indicating that list. Always in Python, square brackets will be used for
square brackets will be used for list. So cars is a list. Under the cars, BMW, Volvo, Ford list is there. So one more list is that, one more list name is what? Passings. Passings. Under this passings list, how many cars passed? BMW passed 3, Volvo passed 7, 2 passed, Ford passed 2. So this is what passings is a one more list. Two lists under the part of your this variable my data set. Okay, two lists. First list name is cars, second list name is passings. Both are part of this my data set. You can change this. Uh, you can change this. Okay, this is a variable. You have created this variable. You can change. You can keep your name, my name. Teja, you keep your name. There is no any problem. Teja is a variable created. Under this variable, two lists are assigned. One list name is cars, another list name is passings. First cars list having cars. फर्स्ट कार्स लिस्ट के अंदर BMW, Volvo एंड फोर्ड कार लिस्ट है. ओके, पैसिंग्स लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ दिया हुआ है. सो 3 इज़ representing BMW cars passed 3, Volvo cars passed 7, and Ford cars passed 2. Now one more variable created, my var PD. PD is what? Alias name, for nickname for your pandas. Data frame. This is compulsory. Don't change this data frame. It is as it is. This is inbuilt, built in. Either function maybe, either a method maybe, either a class maybe. And here under this my data set, you need to use this Teja key. That is what variable. If you otherwise you will get error. The Teja variable created, and that is assigned with two lists. One is cars and passings. Okay, now print my var. My var is a, otherwise if you want to change it where, if you change this where, you, because you need to call this as variable where. Now let us see what happened here. Under this data, 0, 1 to serial numbers, cars is a list, passing is a list. Under the cars, BMW, Volvo, Ford listed, and passings, how many cars passed? Passings 372. This is one type of part of your pandas, because as I told you that pandas is what? It is a library which will be mostly used to analyze the data. So let us see one more example. Checking pandas version. Which version installed? Oh, that is very important. Checking pandas version. The version string is stored under version attribute. Okay, import pandas as PD, print PD dot underscore version underscore. So here import pandas as PD P, whatever you can write, it doesn't matter. Under this we need to check back version. So how can we check the version? Print in bracket this alias name dot underscore underscore version underscore. So print, we want to know the version of print. Okay, what is the alias name for p dot underscore 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 version underscore. Okay, now let us see what happened here. So this underscore is not invalid syntax, so we have given hyphen hyphen, so use underscore, two underscore. Don't give more, only two underscores. Now run this one. Let's see what happened here. This is the version. Are you able to see 2.1.0? This is the pandas version installed. Just we have installed through pip manager na? Python package manager, default package manager. उस समय मैंने pandas को इंस्टॉल किया था, तो अभी उस वर्जन को चेक करने के लिए ये 2.1.0 वर्जन है. अंडरस्टूड दैट? ऐसे चेक कर सकते हैं. उसके लिए पहले उस पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड उस पांडास को अलियास नेम दे दो. अगर अलियास नेम दे दिया तो आपको पांडास के नाम पर कॉल करोगे उसको. अगर आपने अलियास नाम नहीं दिया आपने, इफ़ यू हैव नॉट गिवन ए नेम फॉर, यू नीड टू कॉल द टोटल नेम. अलियास एक निकनेम नहीं दिया तो आपने, यू नीड टू यूज़ पांडास. ओके,
This is what. If you give any alias name was Vasu, you can give your name. पांडास को आपका नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा नाम दे दिया, निक नेम. सो सिंपली वासु लिख दो, वासु डॉट वर्शन. तो तभी